Good evening all of you. Nice to see you again, and we will try finishing chapter 6 today. We had stopped after talking till employment last class, so we'll begin with education today. You know, the survey gives us a very wonderful quote from Dr. Kalam that learning gives creativity and creativity leads to thinking, thinking leads to knowledge, and knowledge makes you great. You know, and that is something you can use also in your answer writing, because these are things that actually help us quite a bit. You know, also, you know, if you look at it, is Sustainable Development Goal 4, that is education. So if somebody asks us about education, education is in SDG 4, and you know, survey says correctly that education will help us in reaching other factors also, you know, with respect to Sustainable Development Goal, like zero hunger, no poverty, gender equality. So education has that capability on Sustainable Development Goals 4, you know, zero hunger, no poverty. ये सारी चीज़ें भी एक educated society handle कर सकती है better. You know, अगर educated हो society तो ये ज़्यादा बेहतर handle किया जा सकता है. Gender equality, you know, and so on. तो एक ये बात बताते हैं survey आपको. Then of course, it enhances in employability, it breaks the cycle of poverty and social marginalization, empowers people socially. That is what education does. And then government has taken steps like new education policy, Samagra Shiksha Abhiyan, you know, for as overarching programs to make it from preschool to class 12th, to assure that there is inclusive education and there is quality education. You know, assure that there is inclusive education and there is quality education. Then the survey goes further and it talks about gross enrollment ratios, you know, across schools and so on. So that is total enrollment in a particular level of school education that takes place as a percentage of population of official age group which corresponds to that education. You know, that is gross enrollment ratio, that total education among schools, you know, so it is total number of people at a given level of education, and it is irrespective of their age. 10 साल का बच्चा या 15 साल का बच्चा अगर 4th में बैठा है, उसे प्राइमरी स्कूल में एनरोल्ड माना जाएगा. इसीलिए आप कभी कभी देखेंगे प्राइमरी स्कूल का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% के ऊपर चला जाता है, because there are kids with higher age sitting in primary institution is still. So total number of people at a given level of education as a percentage of total population in the age group, you know, that is in the age group designated officially, total population in the age group designated officially. So that is the idea, and the survey says that the number has been increasing continuously. This number dropping is a good news. This number dropping is a good news. This shows that now there is better correspondence between people of a given age and their classroom. ये अच्छा समाचार होता है. ये हाई होने का मतलब है कि आपकी क्लास में उस उम्र के बच्चों से हायर उम्र के बच्चे भी बैठे हुए हैं जिनको पहले हायर क्लास पे होना चाहिए था. So don't take this as a negative news. This is a positive thing that in the primary schools then the number of people at a given age group is gradually declining. We have seen the increase in the last couple of years. If you will see, this is COVID pandemic having an impact. That with COVID pandemic, again there are few people missing their class, missing school, going back to primary education. That is the number seen. Otherwise, if you will see, it has increased in upper primary and it has increased in secondary. Good news is that 95% almost of population in the given age group is at upper primary enrollment and almost 80% at secondary enrollment. Now I know that if you compare it to developed economies, it is still a very low number. In those economies, it's almost 100%. But the good news is that we are improving quite a bit in India. In fact, यहाँ तो फिर भी आपको 73.8 से 79.6 दिखता है. जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी वो प्री हिस्टोरिक एज था, लेकिन जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी अपने कॉलेज की 1992 में,
तो मुझे ये नंबर दिखते थे 30s में, तो अगर उनसे कंपेयर करें तो हम बहुत आगे आ गए हैं. You know, these used to be late 20s, early 30s. This is where these numbers used to be. So we have improved quite a bit in the last 30 years in that sense. So that is one to keep in mind. Then the survey also brings to us another factor, that is the steps that the government has taken to improve school education. So one is PM Shri, PM School for Rising India. This is something that has been there since 7th September 2022. You know, this PM Shri, this has been there since 7th September 2022. And the idea in PM Shri is that to equip the school with modern infrastructure and then implement new education policy through them. You know, so modern infrastructure is the key here. School को equip करो modern infrastructure से, उनके अंदर कंप्यूटर की सुविधा दो, स्कूल के अंदर प्रॉपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कनेक्टेड सुविधाएं दो, और ये टारगेट किया जा रहा है दैट बाय 2027 14,500 पीएम श्री स्कूल्स, 2027 तक 14,500 पीएम श्री स्कूल्स बनाने की कोशिश है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, फ्रॉम स्कूल्स विच आर ऑलरेडी ऑपरेटेड बाय देम. सो स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, ये सब देंगे, मिलेगा स्टूडेंट्स को थ्रू देम. स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, आर्ट रूम, all these will be given through PM Shri schools. So that is the basic idea. Also, schools will be engulfed with, or schools will be entrenched with water conservation, and schools will have waste recycling facility, energy efficient infrastructure. तो एक होलसम स्कूल बनाने की कोशिश है जहां स्कूल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल हो और सस्टेनेबल हो. सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? वाटर कंजर्वेशन होगा, वेस्ट रिसाइकलिंग होगी, एनर्जी एफिशिएंसी होगी. तो ये सस्टेनेबिलिटी की बात है. और साथ में बच्चों को लैब्स मिलेंगे, लाइब्रेरी मिलेगी, स्पोर्ट्स की सुविधा मिलेगी, और कंप्यूटराइज ट्रेनिंग मिलेगी, स्मार्ट स्कूल मिलेंगे. तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट स्कूल्स का प्रोविजन बेटर होगा. 14,500 such schools are something where you talk about it. Then of course another thing is national curriculum framework for foundational stage. तो सरकार ने बोला है कि ये डेवलपमेंट होगा starting with children of ages 3 to 8. This is 5, 3 साल से 8 साल के बच्चे, 8 साल से 11, 11 से 14 और फिर 14 से 18. So that is the way children will be developed in the national curriculum framework, 5 plus 3 plus 3 plus 4. Then there will be pilot project on Bal Vatika. This will be about developing children of 3, 4 and 5 plus years by again equipping these places for preparatory class, and October 2022 it has been launched. This has been launched. ये आपके prelims point of view से important बातें हैं तो ध्यान में रखेंगे. Launched October 2022 in 49 केंद्रीय विद्यालय. This has been launched October 2022 in 49 केंद्रीय विद्यालय. And then of course toy based pedagogy, which is actually quite interesting because we need to have toy based pedagogy as young children connect better to toys. In fact, in US and Japan they are using video games now for their children in primary and secondary schools, upper primary and primary schools rather, to develop hand-eye coordination when they sit on big data analytics later in life. So this is how future pedagogy is going to change. So to develop emotional quotient, to develop identification procedures, to develop connectivity. So toy pedagogy will be for that purpose. And then there is again a method of national credit framework. ये बहुत ही अच्छा innovation है. This is about linking all credits जो भी आपने achievements किए from school till college, जहाँ भी उनको लिंक करने की बात है कि जो भी आपने अचीवमेंट्स किए उसको नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की तरह स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, वो सब उसमें नोटिफाई हो जाएगा. So it will consist of skilling the children, reskilling the children, upskilling the children, accreditation of the children, and basic evaluation of the children, and seamlessly integrating all levels of training so that children are trained into doing things. So that's another very good framework. And then strengthening teaching
लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, स्टार्स नाम दिया है इसको। इसको अभी के लिए 6 स्टेट्स में लॉन्च किया गया है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, और ये 6 स्टेट्स अभी इसको शुरू कर रहे हैं एज टीचर ट्रेनिंग फॉर 5 ईयर्स। ये 2020 से 2025 तक की बात है। राजस्थान, महाराष्ट्र एंड ओडिशा, these are the 6 states where STARS program has been launched to improve the quality and governance of school training. You know, that is the purpose कि स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी और इनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए स्टार्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। आपके लिए 2 बातें ज़रूरी हैं इसमें। एक तो प्रोग्राम क्या है, साथ में जब भी तुम्हें बाई चांस एजुकेशन पे कुछ लिखने को दिया, so if they are giving it on education, then you can use these to show your contemporary knowledge. Say these are the schemes run for education in India. Then of course there is Vidyanjali. This is a school with volunteer initiative that has been developed, and this enables community and volunteer organizations to interact and connect, you know, directly with the government and government aided schools of their choice. कि जो volunteer हैं, जो एजुकेशन करना चाहते हैं, जो कम्युनिटी हैं, वो सीधा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से कनेक्ट करें एंड विद्यांजलि में पार्टिसिपेट करें। इट इज़ ऑल्सो थ्रू कॉर्पोरेट सोशल सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। अगेन, you know, if by chance they ask you initiatives of involving public in improving school education in India, Vidyanjali is one such. You know, this is one such initiative that has been developed. And then of course Samagra Shiksha scheme, 2018 government launched it, and the idea of Samagra Shiksha scheme is to make sure that people are not only literate in India, but people are efficiently literate in India. So again, school pedagogy to move in that direction, improving computer literacy and improving communication technology benefits to the students. तो सरकारी स्कूल में जब बच्चे जाएं और अगर 1 मिनट के लिए वो ऐसे वर्ग के बच्चे हैं जो गरीब वर्ग के हैं, उन्हें ये बेनिफिट्स अगर मिलनी शुरू होंगी तो अपलिफ्टमेंट के चांसेस होते हैं। सो दैट इज द आइडिया ऑफ समग्र शिक्षा अभियान। In fact, ICT labs have been approved for 1,20,000 schools and smart classrooms in 82,000 schools across country. ICT labs have been approved for 1,20,000 schools and smart labs have been approved for 82,000 schools across the country. You know, that is the idea of Samagra Shiksha scheme. Now see, and it is aligned, एक और बात आप ध्यान में रखेंगे, that it is aligned with new education policy. समग्र का मतलब होता है जो सभी चीज़ों को कवर करे। तो अगर आपके मन में आता है समग्र शिक्षा अभियान स्कीम क्या है, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था भारत में, उसको बढ़ाया गया है, सर्व शिक्षा अभियान का स्कोप इंक्रीज किया गया है। सो इट इज इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इनटू समग्र शिक्षा स्कीम। दैट इज व्हाट हैज बीन डन इन इंडिया। So increasing the scope of Sarv Shiksha Abhiyan into Samagra Shiksha scheme. That is the basic idea. Now the next thing that comes in is the idea of how higher education has developed in India. You know, so medical colleges have increased from 387 to 648 within last 8 years, and number of MBBS seats have also increased in the same proportion from 51,000 to 96,000. Number of IITs and IIMs now stand at 23 and 20, so around 7 more compared to what it was 8 years ago. And total enrollment in higher education has increased to 4.1 crore from 3.9 crore in the last 2 years. In fact, if we take it to 2016-17, it was 3.7 crore. These are good news, because when people will get better off in higher education, they are somewhere going to become better trained, and the next generation gets even better trained. In fact, the number of teachers has also increased from in the higher education from 13.6 lakhs to 15.5 lakhs. The number of teachers has also increased in higher education from 13.6 lakhs to 15.5 lakhs. The good news in this is that 40% of these teachers are women. So
I say good news because that means there is some gender equity we see. So 60% of the teaching staff in higher education are men, but 40% are women. Again, if you go back 30-40 years in India, it used to be heavily skewed in favor of men. So there is some gender equity that we see in overall teaching staff in India. This is with respect to higher education enrollment. Then government has taken some initiatives for higher education. One is research and development cell in every higher education institution that has been developed, and this is aligned with the provision of NEP 2020. Aligned with NEP 2020, that is, not only have research and higher education cell, but also make them proactive. Then 2 academic programs simultaneously are now allowed, whether online plus offline or both online. Everything is allowed, 2 academic programs simultaneously. Interest subsidy is given on education loan, which is a good idea again, because there are many students who seek it, otherwise they will not be able to attain it. This is given for parental income below 4.5 lakh. The interest subsidy scheme is for parental income below 4.5 lakh rupees. So that is where interest subsidy scheme is being given, and also, and this is for professional study. Any kind of professional study, it can be done. Also for this loan, where the parental income is less than 4.5 lakh, no collateral guarantee is needed and no third party guarantee is needed. थर्ड पार्टी गारंटी होता है कि आपके लोन पे करने की गारंटी आपकी जगह कोई और ले, नॉर्मली पेरेंट्स लेते हैं फिर ये गारंटी कि ये लोन पे होगा। तो इस केस में कोलैटरल गारंटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी थर्ड पार्टी गारंटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड देन देयर इज अखिल भारतीय शिक्षा समागम दैट हैपेंड इन वाराणसी, जिसमें देश भर से वाइस चांसलर्स एंड हायर एजुकेशनिस्ट्स दे केम टुगेदर, डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, टू हैव an extended vision discussion to renew the commitment and make sure that how India can be made a knowledge powerhouse in future. Remember again, the idea should be to not only make India a manufacturing powerhouse, but also to make knowledge powerhouse for India. Then the next thing is that we go into is equipping the workforce with employable skills and knowledge in mission mode. That how do you make sure that your workers are equipped with knowledge? तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप किया गया 2014 में, स्किल इंडिया मिशन लाया गया 2015 में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया। अब इसमें इन बातों का ध्यान रखोगे that when these things were brought about, the whole idea was to promote skill development and entrepreneurship, and then national policy on skill development and entrepreneurship was launched. In Startup India program, this was given a lot of salience. And then NEP 2020 is also heavily focused on vocational education, that how do we make sure that we give vocational education to children so that they can do better for themselves. Now, if you look at things, again, ये कुछ बातें बताती हैं that how distribution of people who receive formal vocational education and training, and if you see 15 to 29 years people are receiving 2.8% of total, and 15 to 59 is 2.4 in 2018-19, and that kind of rises to 4.1 and 3.3 by 2020-21. In fact, post 2020-21 there have been more proactive schemes launched, so it is expected that by the time we get the data on 22-23 we would be found to be doing relatively better. This is a research that I had conducted, so I'm just sharing it with you. I'm sure the MIT people won't mind, but this number tentatively now is reaching around 5% and 4.6% in India, that we conducted around 2 months back. So these numbers are becoming comparatively better with respect to formal vocational and technical training in a percentage of people who are there. So that's again a good news that we see. The best part is we see in construction many people growing in this, manufacturing many people growing in this. Health and education is the real place where many of these jobs are getting created. So health, education, construction, manufacturing, यहाँ पर आप देखेंगे that जो formal skill and development training impart कर रहे हैं, जो टेबल इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है, उसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो 31.6%
is in healthcare itself, where training is being imparted, and 20% in education. So just keep that in mind, that health, education, transport, and construction, manufacturing, these are all sectors, but health is the key. हेल्थ में सबसे ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है, उसका कारण भी है बिकॉज ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन इज द मोस्ट कॉमन स्फीयर ऑब्जर्व्ड. एंड देन ऑफ कोर्स IT, BPOs एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. तो ये सारे सेक्टर्स हैं. अगर आप देखें कि अगर कोई हमसे पूछता है किन सेक्टर्स में ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग ज़्यादा है, हेल्थ, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एजुकेशन, ये वो सेक्टर्स हैं जहां 20% या इससे ज़्यादा वर्कर्स ट्रेंड हो रहे हैं ऑन द जॉब. So skilling is happening at some fast pace, which is good news. Why skilling is a good news? Skilling is a good news because better skills make you better efficient, and better efficiency gives you better income. तो अगर हम income high चाहते हैं लोगों के लिए, तो उनको skills हमें better देना पड़ेगा. That is the key factor here. Then if we take things here, Skill India Mission गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें लेकर आए. वहाँ मैं तुम्हें एक सजेशन भी दूंगा कि स्किल इंडिया मिशन के अंदर पढ़ते हुए सर एक बहुत अच्छा बॉक्स दिया है इकोनॉमिक सर्वे ने, 6.6 प्रोग्रेस ऑफ स्किल इंडिया मिशन. देयर इज अ बॉक्स दैट इकोनॉमिक सर्वे हैज गिवन ऑन प्रोग्रेस ऑफ स्किल इंडिया मिशन. उसको तुम एक बार रीड करोगे तो मेंस में तुम्हारी बड़ी मदद होगी. Because of paucity of time, I cannot take you into the entire detail of it. But if you read through it in your mains exam, you will be helped. 6.6, in Skill India Mission, the progress of Skill India Mission. So of course, they have launched Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana, Rural Self-Employment Training Institutes, Antyodaya Yojana for National Rural Urban Livelihood Mission, Kaushal Vikas Yojana, Pradhan Mantri Kaushal Kendras, and Jan Shikshan Sansthan. The only challenge, if you ask me, of these things is Skill India Mission is employability and employment opportunities are still missing. हम बहुत लोगों को स्किल कर रहे हैं, लोगों में मेथड्स डाल रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये अभी भी कंपैरेटिवली मिसिंग है. इस पर हमें काम करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है दैट वी शुड वर्क ऑन क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्रिएटिंग मोर पीपल एम्प्लॉयबल. देन ये आपके साथ में शेयर करता ही हूँ अपने स्लाइड्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आपको दिमाग में रखना है. This is major initiatives from 14 to 22 for better overall health. So this will actually give you a wholesome answer. अगर कोई पूछे what has the government done in the last 8 years for healthcare provision. So this will, if you remember this chart, this will actually give you a lot of things. Mission Indradhanush for vaccination, Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram, Swachh Bharat Abhiyan, started 2014. Then by 15-16 there was free drugs and diagnostic service. Gradually this was created also into affordable medicine services that the Prime Minister had initiated. Then of course Maternity Benefit Act, 6 months paid maternity leave. Then Ujjwala Yojana, and then National Dialysis Program. Then by 2017 National Health Policy, Mental Health Care Act, Strategic Plan for TB Elimination, and AIDS Control Act. And then 18 onwards, Ayushman Bharat, Wellness Centers, PM Jan Arogya Yojana, Poshan Abhiyan, and Anemia Mukt Bharat Strategy. अब पता है क्या है, जब आप ये पढ़ते हो ना कि कुछ नहीं हुआ है देश में हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, तो ये जो स्कीम्स हैं आप अगर लिखेंगे अपने एग्जाम में, तो आप एग्जामिनर को मैसेज देंगे दैट लुक, और अगर इनमें से तुम्हें 5-7 स्कीम भी अच्छे से पढ़ ली जो लेटेस्ट हैं स्पेशली, they get you extra credit points because you tell the examiner, look, I am aware of what the government is doing, like Surakshit Matritva Ashwasan or E-Sanjeevani, social awareness program to neutralize pneumonia, और सक्सेसफुली सांस नाम दिया है उसका. तो ये सारी स्कीम्स हम अगर इनमें से 5-6 भी मेंशन करें तो हम एग्जामिनर को एक सही पॉजिटिव मैसेज देते हैं दैट दीज स्कीम्स आर द वंस व्हिच हैव बीन वर्किंग. देन ऑफ कोर्स 2021 इट वाज अ लॉट अबाउट कोविड वैक्सीनेशन एंड Finance Commission Health Sector Grants, Ayushman Bharat Digital Mission, Health Infrastructure Mission, Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 21.
and 22 is TB Mukt Bharat Abhiyan to end by 25, National List of Essential Medicine Revision, Telemental Health Program. Also remember, there is also program with respect to fixing appropriate price for life-saving drugs. So that is again important, that we are trying to fix an upper limit on what price can be charged for life-saving drugs. So these are things that again help us in writing a good answer. इसके अलावा प्रीलिम्स में मुझे उम्मीद कम है कि यहाँ से कोई बात ज़्यादा पूछेंगे. The next is about improvement in health related indicators. इसमें एक दो चीज़ों का ख्याल रखोगे, that in most of the indicators we have seen the improvement. For example, households covered under health insurance has improved to 41%. Total fertility rate has come down to below replacement rate. Family planning measures are used in 66% families. Good news is here, ये maternal mortality rate को कम करता है. Institutional deliveries that happen, ये infant mortality rates को कम करेगा. Neonatal visits, antenatal visits to the children. We have seen infant mortality rate falling to 35.2. That is something that we need to keep in mind. And under 5 mortality rate falling to 41.9. अब हम धीरे धीरे sustainable development goals की तरफ बढ़ रहे हैं. That is the idea. Even though we are still far away from there, ideally these numbers should be in the low 10s or low 20s. ये 11-12 के ऊपर नहीं होने चाहिए. But हमारी शुरुआत काफ़ी ख़राब थी, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए. Till as late as 2001, infant mortality rate in India used to be 92 per thousand. So compared to that, now we are kind of improving things, but we can go faster here, no doubt about that. Then children vaccination improving. This will help in stopping stunting of children and wasting of children. Then children under 5 years who are stunted, the number has gradually gone down in the last 5 years between the two National Family Health Surveys. Same for weight for height and same for underweight. But अभी भी ये numbers काफ़ी high हैं. इन numbers को ना ignore नहीं किया जा सकता. These numbers are still very high, and there's another problem in it. These are some of the state specific places where they are high. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां ये नंबर्स अभी भी काफ़ी हाई हैं, तो वहां हम चैलेंज ले सकते हैं ब्लॉक्स को लेकर, स्टेट्स को लेकर, डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर. अगर उनको टारगेट करें तो इन नंबर्स को सुधारा जा सकता है काफ़ी हद तक. देन ऑफ कोर्स ये एक नया खतरा दिख रहा है हमें, ओवरवेट चिल्ड्रन, ओबीज पीपल. This is something where the BMI above 25, this is new challenge that India is facing, क्योंकि इनसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जैसे obesity, a disease in itself, or hypertension, or diabetes. So this is something we will have to be a little careful about as to how we can protect ourselves. Women menstrual hygiene has improved drastically, and this is of course because of a lot of campaign actively that the government has been running. एक ये अच्छा समाचार है हमारे लिए, 2013-14 में 64% of the total expenditure on healthcare was done out of pocket. लोगों को अपने प्राइवेट जेब में से करना पड़ता था और सरकार सिर्फ 28.6% करती थी. अब ये बढ़कर जो ये वैल्यूज़ हैं, ये धीरे धीरे ये घटता जा रहा है. Now the out of pocket expenditure is 48 and government expenditure is 40. So this can be taken to be a major improvement, that out of pocket expenditure on healthcare in India is now declining. To some extent, Pradhan Mantri Ayushman Bharat Yojana, under which we develop we provide the insurance schemes, are also responsible for that. That ये insurance के मदद इसमें काफ़ी मिल रही है हमें, especially the Jan Arogya Yojana part, where the out of pocket expenditure has been brought down, and increased expenditure on healthcare, like increased primary healthcare centers, community wellness centers, which are around 1,54,000 now in India. So these are also helping us quite a bit. Then of course, if you look at social security expenditure on health as percentage of total health expenditure, and private health insurance expenditure as percentage of total health expenditure, ये social security, ये दोनों ही बढ़ रहे हैं, जो दोनों अच्छी बात है. एक तो social security expenditure बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा क्या है, that as these expenditures, और ये पिछले 2 साल में और भी बढ़े हैं, 3 सालों में. हमारे पास डेटा 18-19 तक का है क्योंकि हम NFHS पे बेस कर रहे हैं उसे, बट अगले सर्वे में ये बेहतर नंबर्स और आएंगे, because in the last couple of years the numbers have gone up even further. But even this in good news is that these are to protect the poor from spending on disease with high expenditures that they just might create. इससे poor का वो benefit होता है कि जो high expenditure disease हैं
उसमें उनको प्रोटेक्शन मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज़ बीन गुड विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर सेंटर। और ये याद रख लोगे, रूरल हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स, दीज आर 30 बेडेड हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स 4 to 6 bedded hospitals with a medical officer in charge, and sub centers, these are peripheral contact points between primary health care centers and community manned with one health worker, nurse, midwife and one health worker male. So one female health worker, one male health worker, ये पहला contact point होता है। यहाँ कोई दिक्कत आती है तो लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भेजे जाते हैं, सेकेंडरी एंड सो ऑन, सो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड सो ऑन। अच्छी बात यह है कि इन सभी में अगर हम डेटा चेक करें तो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। The number of functioning primary health centers, community health centers, sub centers, they are increasing quite well if we look into the data on the numbers prevailing. In fact, if we look at things, and there's one more thing, कहीं कहीं तुम्हें डेटा थोड़े कम दिखेंगे, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के डेटा तुम्हें थोड़े कम तरफ दिखेंगे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि सरकार उनकी जगह कम्युनिटी वेलनेस सेंटर बना रही है, तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कहीं कहीं रिप्लेस कर रहे हैं। That where primary health center was not well functioning, the government is bringing wellness centers. अब यहाँ देखेंगे वो 25.1 से 24.9 हो गया, तो इसलिए क्योंकि wellness centers बनने की बात हो रही है, तो इसलिए ये चीज़ आई है। And similarly sub centers from 156.1 to 157.9 lakhs thousands. So this is something where we are doing well. Community health centers, they are showing some trend from as a stagnancy, but that is because of lack of permissions given by certain state governments, which say that we are running our own centers and we don't need these community health centers to go larger in number. The doctors' presence at PHCs, again there is no explanation given in the survey for the decline of doctors' presence in PHCs, but one reason that we have observed in India is that during COVID pandemic, more doctors were needed in the urban areas, and therefore they were sometimes called on duty from primary healthcare centers, secondary centers to urban areas. Now we are not sure about it, but this is one explanation that I read in one of the journals that I was reading through, so I thought I will share it with you. Then of course, apart from that, we see that the availability of pharmacies and all has done comparatively better, but overall if you ask me, COVID has had an impact here. कोविड की वजह से क्या हुआ है कि कुछ फैसिलिटी जो गांव तक पहले पहुंच रही थी, रूरल हेल्थ केयर के लिए पहुंच रहा था, वो थोड़ी वीक हुई हैं। सो वी विल हैव टू वर्क ऑन दैट। सर्वे इज़ क्वाइट ऑन इट। सर्वे में जो भी चीज़ सरकार के थोड़ा डिस्टर्बिंग है उसमें सर्वे शांत हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ डिस्टर्बिंग हो उसमें चुप हो जाओ, बताओ ही मत। ये सभी लोग यूज़ करते हैं। अब देखिएगा जिन चीज़ों में सरकार अच्छा कर रही है, वहाँ जो अखबार सरकार के खिलाफ है वो शांत हो जाते हैं। सर्वे प्रो सरकार लिखना चाहते हैं तो इन चीज़ों में शांत हो जाते हैं। बट दिस इज समथिंग वी गॉट टू गेट अ लिटिल वरीड अबाउट, दैट सम ऑफ दीज नंबर्स आर डिक्लाइनिंग, व्हिच आई थिंक शुड बी इम्प्रूविंग ओवर अ पीरियड। देन ऑफ कोर्स इज द नेक्स्ट थिंग अबाउट मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर हेल्थ अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी जा रही है अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। दिस इज अंडर मिशन इंद्रधनुष, और अब मिशन इंद्रधनुष का 4.0 वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। नाउ वी हैव द 4.0 वर्जन लॉन्च्ड ऑफ मिशन इंद्रधनुष, एंड देन till December 2022 11 phases of MI have been completed. फेजेस अलग हैं, फेजेस हैं कितनी बार ये स्कीम रन की गई। वर्जन का मतलब होता है कि हर बार कोई नई बात इसके साथ ऐड की गई, जैसे वैक्सीन देने के साथ इंफॉर्मेशन कैंपेन, वैक्सीन देने के साथ मदर्स की ट्रीटमेंट बेटर हो सके उसके कैंपेन, तो उस तरह के उसको वर्जन कहते हैं। एंड टोटल 4.5 करोड़ चिल्ड्रन एंड 1.1 करोड़ women have been vaccinated under the scheme. So these are again positive numbers that we are looking at for immunization. Again और ये जो मैंने कहा मिशन इंद्रधनुष का 4.0 है, ये 416 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है। दिस मिशन इंद्रधनुष 4.0 वर्जन इज लॉन्च्ड इन 416 डिस्ट्रिक्ट्स, and this is about making sure that all children and pregnant women are covered entirely under Azadi Ka Amrit Mahotsav. As survey writes, I'll read it for you, that mission MI 4.0 was conducted in 416 districts in the fiscal year 22-23, including 75 districts under Azadi Ka Amrit Kal Mahotsav. So that is the basic idea, that across 32 states and union territories, children and pregnant women getting this support.
The next thing that comes up is 𝐸-संजीवनी. ये एक इनोवेटिव आइडिया है टेलीमेडिसिन सिस्टम का. तो आप याद रखेंगे दैट 𝐸-संजीवनी इंटीग्रेटेड क्लाउड बेस्ड टेलीमेडिसिन सिस्टम एप्लीकेशन. तो इसमें बेनिफिट क्या है? द पेशेंट कैन स्टे एट होम and the patient will get medicine benefits free of cost. See, citizens in the confines of their homes, free of cost. So 𝐸-संजीवनी is becoming possible now with the movement of digital Bharat and digitalization of the country over a period. That is the basic idea that you look for. So 𝐸-संजीवनी is giving a result there. Then when you look at this, the progress under Ayushman Bharat, they make a whole box on it again, box 6.7, that what has been the progress under Ayushman Bharat. Just make sure that you have done it decently. I've given you the basics there, that health under Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana, rupees 5 lakh per family per year for secondary and tertiary hospitalization is given. Over 10.7 crore poor and vulnerable families. It's the bottom 40% of India's population judged from SECC data. सोशियो-इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा से जो बॉटम 40% है इंडिया के पॉपुलेशन में, उनको कवर करने की कोशिश है. और आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स 1.5 लाख ये प्रोवाइड किए जा चुके हैं अभी तक. और 135 करोड़ से ज़्यादा क्यूमुलेटिव फुटफॉल है यहाँ, कि कितने लोग यहाँ आते हैं. तो ऑब्वियसली एक पर्सन 10 बार भी जा सकता है. तो क्यूमुलेटिव फुटफॉल इज मोर देन 135 crore under these community wellness centers already. And then there is a Ayushman Bharat digital mission, which is a good enough idea of maintaining records of people, so that in case they get ill in future, the record can be shared with the healthcare professionals, and that can help in making them well comparatively at a faster pace. So this is something that government has done. ये दिमाग में रखोगे, कभी कभी आयुष्मान भारत स्कीम पे ही लिखने को दे देंगे, तो हमें पता होना चाहिए. Then of course एक और है, इसको हम कहते हैं नेशनल डीवर्मिंग डे बनाया हमने, और इसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट. लो हैंगिंग फ्रूट्स ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकते हैं बिना ज़्यादा इंटरफेयर किए हुए सिस्टम में. दैट इज़ वाई लो हैंगिंग फ्रूट्स. तो ये 10th February एंड 10th August को हर साल रन किया जाता है. 10th February and 10th August to make sure that our children are made they are dewormed, stunting can be reduced, school absenteeism can be reduced, years of schooling can be increased, productivity can be improved, anemia reduction के ऊपर काम है, तो cognitive functions बढ़ेंगे. देखो बच्चे जो स्कूल छूटते हैं कभी कभी वीकनेस से छूट जाता है, वर्म्स हुए, न्यूट्रिशन नहीं मिला, उनसे छूट गया, क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं मिल पाई. अब deworming and then connecting it to anemia cure, all this will help in making sure that we have good enough established things here and people are developed in that manner. So this is the basic idea that we develop across. Then of course there is a COVID-19 vaccination program. ये सरकार का काफ़ी फेवरेट रहा है हमेशा. तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी करीब करीब 2 pages डिवोट किए हैं of COVID-19 vaccination program to that. 2 things launched on COVID-19 pages given to this. So it says that vaccination has been given to all, और ये ध्यान रखेंगे हम कि 220 crore people crore vaccines have been given to people, and that makes it the world's largest vaccine program that we have had. मेरे हिसाब से लेकिन chances कि आपको कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में या ट्रबलसम क्वेश्चन पूछेंगे इसके ऊपर, चांसेस कम है. आप चाहे तो इसको बस एक पेरिफेरल मेन पॉइंट दिमाग में रख सकते हैं, बट चांसेस दैट दे विल पुश यू हियर आर रिलेटिवली लेस. Then of course comes the idea of dedicated COVID infrastructure, oxygen infrastructure. Doctor patient ratio has improved, 80% availability of registered allopathic doctors and 5.7 lakh Ayush doctors. इसमें ये नंबर दिमाग में रखना, क्योंकि WHO बोलते हैं 1:1000, but 1:834 is now the number of doctor patient numbers in India, which is again something which has helped a lot.
और सर्वे मेनली कहता है दैट दिस इज बिकॉज ऑफ मोर ट्रेनिंग प्रोग्राम, better postings, giving incentives for people to you know disperse themselves across the country. पहले क्या होता था, डॉक्टर पेशेंट रेशियो हाई था, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, कुछ जगह पे कम. अब वो प्रॉब्लम अभी भी है. Delhi has 300:1 as doctor patient ratio, Jharkhand has 3750:1, so obviously that problem exists, but to a great extent programs are being launched to control that. But again my suggestion will be that these are points which won't be majorly troubling points for you. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मत देना. अगर तुम खुद भी सर्वे पढ़ते हो, especially as interview candidate and all, there should not be a major time given to these boxes. There is a box 6.7 that I think you can easily get over with. Now there is social protection for the rainy day. These are insurance programs कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हुई, आप कहीं फंस गए किसी अचानक सिचुएशन में, तो उसके लिए सरकार ने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, यू नो. सो दिस इज प्रधानमंत्री वय वंदना योजना. नाउ दिस इज फॉर सीनियर सिटीजन्स above 60 years of age to provide them a minimum pension, you know, that the government of India is giving through LIC for a term of 10 years, and it is linked to the price at which they purchase the pension policy. So remember, this is a pension policy for senior citizen, pension policy for senior citizen, और जितना वो contribute करेंगे उसके हिसाब से उन्हें पेमेंट मिल जाएगी, और ये मिनिमम 10 years के लिए है. So वय वंदना योजना is for that. Then similarly जीवन ज्योति बीमा योजना, this is available for people in the age group of 18 to 50 years, giving them a risk coverage of 2 lakh in case of death. All right, and that death can be due to any reason. So this is life insurance scheme. Then there is Suraksha Bima Yojana, which is an accident insurance scheme. This gives an insurance of up to 2 lakh in case of an accidental death, or 2 lakh in case of permanent disability, and 1 lakh in case of temporary disability. तो अगर आपकी कोई partial disability है या टेम्पररी डिसेबिलिटी है, कुछ दिनों के लिए डिसेबल हो गए या पार्शियली डिसेबल हो गए, तो 1 लाख रुपीस, और परमानेंटली डिसेबल हो गए या डेथ हो गई एक्सीडेंट में तो 2 लाख रुपीस. दिस इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल. एंड देन देयर इज श्रम योगी मानधन योजना. दिस वाज अगेन समथिंग व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड एज अ कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, जिनका भी जो मंथली मिनिमम अश्योरेंस देता है पेंशन 3,000 rupees per month after attaining the age of 60 years. तो जो वर्कर्स, आप सुनना ध्यान से इस बात को, जो वर्कर्स 18 to 40 years के हैं और सरकार के किसी और पेंशन स्कीम में नहीं आते और उनकी इनकम 15,000 पर मंथ के नीचे हैं, वो इस स्कीम में आ सकते हैं. All workers who are between 18 to 40 years of age don't qualify for any other pension scheme of the government and earn 15,000 or less per month can contribute, and then after they become 60 years of age, they will get 3,000 per month from the side of insurance. General Insurance Company and Oriental Insurance Company, both are the functional agencies here. So that is called Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana. That if somebody has been a worker or a casual labor, still they have an opportunity that they will be able to get some benefit from the government. Now, and remember, these workers, again I repeat, should not be a member of EPFO, ESIC, NPS. इनमें से किसी के मेंबर ये नहीं होने चाहिए, 18 to 40 years के बीच में होने चाहिए, और मंथली इनकम 15,000 के नीचे होनी चाहिए. ये 3 कंडीशन जो फुलफिल करेंगे वो क्वालिफाई करते हैं फॉर द स्कीम. They have to make a contribution in this scheme, and based on the contribution, after they retire, they will get 3,000 rupees per month, 3,000 rupees per month till they live. So that is the scheme that has been launched. And then there is Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi scheme, PM Swanidhi. 10,000 rupees will be given to each street vendor as loan, and if they give for 1 year, और अगर 1 साल में उन्होंने टाइमली रिपे कर दिया तो उनको 20,000 rupees और मिलेंगे for another 18 months. 10,000 rupees will be given as loan to street vendors for 1 year, and if they pay back this loan 10,000 rupees within 1 year, they will qualify to get another 18,000 rupees as loan for the next
18 months, अगर एक साल में वापस कर दिए तो 20,000 रुपये और मिलेंगे अगले 18 महीने के लिए। तो ये स्वनिधि स्कीम है। इसके अंदर सरकार ने अभी तक till now more than 39 lakh loans have been disbursed and 45 lakh loan applications have been approved till January 2022. More than 45 lakh loan applications have been approved and 39 lakh loans have been disbursed under the scheme. Then of course, apart from that, there is Mudra Yojana, that is Micro Unit Development and Refinancing Agency. Micro Unit Development and Refinancing Agency. 3 तरह के लोन मिलेंगे, शिशु, किशोर एंड तरुण, up to 50,000 शिशु, 50,000 to 5 lakh किशोर and 5 lakh to 10 lakh tarun. And this will be given for the purpose of any micro enterprise. There will be no collateral required on this. There will be no collateral required on this, and the interest taken will be decided by the lending institution, but on the lowest end. तो कोई collateral नहीं लिया जाएगा. Interest taken lending institution ड्रॉ करेंगी, पर वो lowest end पे होगा. Overnight borrower के पास क्या लोन है उसी पे ये निर्धारित होगा. So that is what has been done across. Then of course गवर्नमेंट ने एक और काम किया है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट एंटरप्राइज बनाई है इंडिया में. that is what the government has developed. It is called credit guarantee fund for micro units. उसके थ्रू इसके जितने लोन्स हैं उनके कोलैटरल गारंटी किए जाएंगे. Credit guarantee fund for micro units, and through this fund all the loans will be guaranteed here. In fact, जो ओवरड्रॉ की फैसिलिटी प्रधानमंत्री जनधन योजना में दी जा रही है वो भी ये फंड गारंटी करेगा. The overdrawing facility in Jandhan Yojana will also be guaranteed by Credit Guarantee Fund for micro units. एक और बात गवर्नमेंट ने कहा है that जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनको 10 लाख रुपीस से 20 लाख रुपीस का लोन दिया जाएगा वो भी कोलैटरल फ्री रहेंगे और इसी के थ्रू कवर्ड रहेंगे. So the Credit Guarantee Fund for micro unit, Credit Guarantee Fund for micro units will cover Mudra loans, will cover the loans of self-help groups, and will cover the Jandhan Yojana external borrowings. So this is what the government is doing. अब अगर हमसे कोई पूछता है कि अच्छा गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं फॉर सोशल सिक्योरिटी डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं फॉर इंश्योरेंस प्रोविजन एंड सोशल सिक्योरिटी डेवलपमेंट. Then there is another one, that is development of India's rural economy, the initiatives that are done for India's rural economy. So now they say that still 65% of population lives in rural areas and 47% of the population almost is dependent on agriculture. So rural development initiatives are imperative. They got to happen, that we will need rural development initiatives. What are these? अब ये बॉक्स फिर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये तुम्हें याद रह गया तो सारे रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स का ध्यान हो जाएगा. If you can remember this box, then the entire rural development initiative can be taken care of. Good to see you all too. Thank you for saying that, Anand. So when you look at this, पहला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 2.1 crore houses made under that. 22 crore, the Jan Arogya Yojana beneficiaries, and that is for quality health care. 7.2 lakh kilometer roads under, the idea of, all-weather roads being developed under PM Gram, the scheme on road building across PMGKSY. So, अगर तुम देखो ये बातें, जो हमारे जो schemes रही हैं, वो रही है to make sure that we have enough of development for our people. That is the basic idea कि लोगों की development enough तरीके से की जा सके. That is the idea. National Rural Livelihood Mission दीन दयाल उपाध्याय के अंदर वो launch किया गया. कुछ schemes को MNREGS से connect किया गया. That is the idea. Some schemes have been linked to MNREGS. अब मैं एक एक करके उन पे आता हूँ अभी, but कुछ बातें समझना. तो एक हाउसिंग फॉर ऑल जिसके लिए आवास योजना, सहज बिजली हर घर योजना,
2.9 crore rural households electrified on demand, mind you. And this scheme was initiated in 2017 September, completed by March 2022. So on demand, that is the idea. Then of course 11 crore tap water connection, जल जीवन मिशन. अब इसमें पता है क्या था, जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ तो 19 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स में से सिर्फ 3 करोड़ के पास टैप वाटर कनेक्शन था. 16 करोड़ को टारगेट किया जा रहा है कि टैप वाटर कनेक्शन दिया जाए, एंड 11 करोड़ अब पहुंच गए, मतलब 8 करोड़ उनमें से कवर हो गए हैं. आई रिपीट अगेन, 19 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स थे बिना टैप वाटर कनेक्शन के. उन 19 करोड़ में से 19 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड हैं इंडिया में, उनमें से 3 करोड़ के पास अश्योर्ड टैप वाटर कनेक्शन था. आज की डेट में 11 करोड़ के पास है, मतलब 16 करोड़ में से 8 करोड़ लोग कवर हो गए हैं. आउट ऑफ 16 करोड़ पीपल टारगेटेड अंडर जल जीवन मिशन फॉर टैप वाटर, 8 करोड़ आर नाउ कवर्ड. You know, now when you look at this further, the idea is to create again Deen Dayal Upadhyay Gram Kaushal Vikas Yojana, skill development for 13 lakh candidates. 11 करोड़ LPG कनेक्शंस अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. इसमें भी क्या ध्यान रखोगे पता है, इस साल से सरकार ने स्कीम लॉन्च किया PMUY 2.0, जिसमें ये कह रहे हैं कि पहला जो आपका रीफिल होगा वो फ्री होगा, और जो पैसे आप खर्च करोगे, जो टाइम और पैसे आप लगाते थे रजिस्ट्रेशन में, वो सिंप्लीफाई कर दिए जाएंगे. सो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, एंड इट विल बी द first refill will be free. So this is to encourage more and more people to join Ujjwala Yojana to move into clean cooking fuel part. Then of course MGNREGS, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, that of course is giving huge benefits to people. And then social security given for various kind of Swasthya Bima Yojana और इवन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स. तो ये सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं अब सरकार, दैट आप हेल्थ इंश्योरेंस दो, लाइफ इंश्योरेंस दो, उसके थ्रू आप क्रिएट करो. PM Shri schools we have already talked about and developing it, you know. And then of course the Gram Sadak Yojana, that develop connectivity, all weather roads. 7.2 lakh kilometer roads have been constructed since 2000 here. We are now in the third phase of Gram Sadak Yojana. So this is and third phase of Gram Sadak Yojana में दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं. एक तो ऑफ कोर्स पक्का रोड बनाए जा रहे हैं, ऑल वेदर रोड बनाए जा रहे हैं, प्लस इन रोड्स को कनेक्ट किया जा रहा है ग्रामीण रूरल एग्रीकल्चरल मार्केट से, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स से और स्कूल्स से. So these roads are being constructed and then they are being connected to these places, which is another good news that we are having. So effectively, if you ask me, we are doing few good things across here, which is going to enhance our rural living standard to a great extent. Then of course ये सवाल एक पूछते हैं हमसे कभी कभी कि रूरल इनकम बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है. तो पहला नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और ऑब्जेक्टिव क्या है इस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का, सोशल मोबिलाइजेशन. एंड और ये याद रखोगे 1 2 3 4 की तरह. कभी कभी पूछेंगे कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है. कभी क्या होगा, आपसे पूछ लेंगे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लॉन्च किया है और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ये सभी आंसर आपको यहाँ मिलते हैं. In the mains exam, sometimes in paper 2 also they ask you this, connecting rural employment to social welfare. So one is to mobilize and promote and strengthen self-managed and financially sustainable community institution. कि रूरल पुअर्स के लिए कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन जाएं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएं, NGOs बन जाएं, और वो रूरल पुअर्स को प्रमोट कर सकें बाय मोबिलाइजिंग द रिसोर्स, promoting their availability and strengthening their presence. You know, that is one idea. Then financial inclusion like banking inclusion, a Jan Dhan Yojana, credit inclusion, Kisan credit card, Mudra Yojana, and insurance inclusion. You know, all that we talked about at the moment. So yeah, financial inclusion. Then sustainable livelihoods, making sure you don't disturb the ecology, making sure that you have a long-term livelihood possibility, that is sustainable livelihood. And then social inclusion and development and access to entitlement through convergence of what you are trying to achieve and what you are finally landing up with. So these are things given under the rural income enhancement program, which is again a good news as far as Indian rural income enhancement is concerned.
अगर तुम्हें याद हो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि एक हमारे लिए जो दिक्कत आ रही है, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक दिक्कत आ रही है, वो है of rural wages going down, real terms. So real terms rural wages can go up only when rural productivity is high, and rural productivity will be high only when we focus on wholesome growth in all these units. Then of course we move further, and this is about components of DNRLM जो मैं भी अभी तुम्हें बता रहा था. तो दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में फाइनेंशियल इंक्लूजन, engendering farming and farmers collectives, food, nutrition, health and wash. This is about water supply which is clean, sanitation and hygiene, that is wash. And then social inclusion, skill and entrepreneurship. लोगों को skill दें, लोगों को entrepreneurship दें, and making sure that people are used to getting what we have been trying to make them achieve. Last mile delivery to be strengthened. The point is that, so NRLM का बेसिक पर्पस यही है कि लोग ट्रेंड हों ताकि लास्ट माइल डिलीवरी बेटर तरीके से उन्हें दी जा सके. Then of course when it comes to MNREGS we see a trend, और तुम भी गौर से देखना 2019-20 तक एक ट्रेंड दिखता है about person days generated, average person household and women participation rate. अगर तुम देखोगे 2019-20 के बाद, since we had the COVID pandemic, due to that this increased drastically, because of the COVID pandemic this happened. Next year the pandemic had not fully receded, so this was still pretty high. 22-23 the data is still January, but we see a drastic decline now because with the receding of pandemic there will be lesser number of people seeking jobs. अब अगर तुम ये डेटा देखते हो तो तुम्हें एक क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों हम कंपैरेटिवली जो मनरेगा है उस पे बजट थोड़ा कम करते जा रहे हैं. मैं फिर रिपीट करूंगा जो मैंने पहले कहा था, मेरे हिसाब से फिर भी ये बजट 80,000 करोड़ होना चाहिए था इस साल, लेकिन कम करने की वजह क्या है ये बता रहा हूँ. That the budget on Manrega has been reduced because number of people seeking this job under Manrega have now been comparatively reduced. So this is the thing we see. Another good trend we see is larger participation rate of women, which means that the men are again migrating to the city. इसको दो तरह से ले सकते हैं. Men are migrating to the city, which means women participation is rising, but on the other hand it means that men are still not getting quality jobs in the rural areas, forcing them to migrate to the city. So you can take it both ways when it comes to the factors here. In real terms means after adjusting for inflation, all right, after adjusting for inflation is in real terms. Then if you look at things further, the survey again makes a box on achievement of Manrega. तो एक है geotagging of assets, more than 5.2 crore assets have been geotagged. तो एक वो geotagging of assets हो रहा है. अब geotagging का मतलब होता है, अब पता चलता है रियल टाइम में असेट पहले किस हालत में था. जैसे अगर आप कोई इरिगेशन के लिए असेट बना रहे हो तो पहले किस हालत में था, मनरेगा के काम चलते हुए किस हालत में है और होने के बाद किस हालत में है. तो उसके इसमें फजिंग कम हो पाती है और मिसयूज ऑफ फंड्स कम हो पाते हैं. So what was the condition of the asset before the program began, during the program and after the program. So fudging of data and all is comparatively then reduced. Then of course there is a clause created that there has to be a mandatory expenditure on agriculture and allied activities, and now it is 68.5%. In 23 the mandatory expenditure is 60%, but we see that 68.5% is what we are reaching. Then national electronic fund management system को use करके e-payment कर रहे हैं मनरेगा में. All right, this is used by developing national electronic fund payment system, NEFPS. So national electronic fund payment system को use करके e-payments are now at 99.7% and direct benefit transfers at 99%, plus आधार based payment to 14 करोड़. इन सब का benefit ये होता है कि आपके corruption, duplication, ghost workers, इन सब के chances कम हो जाते हैं. Corruption of workers not being present but paid, ghost workers created जो आदमी नहीं है उनको पे कर दिया, या फिर taking money from the workers before giving them the due payment. It's not eliminated. अब आपके अंदर का जो skeptic है वो जाग जाएगा, वो कहेगा सर फिर भी मैंने अपने गांव में देखा ऐसा नहीं हो रहा.
ठीक बात है, पर तुम्हारा गांव सैंपल साइज 1 है, भारत में करीब करीब 7 लाख गांव हैं, तो अगर 2 लाख गांव में भी इम्प्रूवमेंट है तो देश के कम से कम नहीं करते हुए भी 150-200 करोड़ रुपए बच जाएंगे। तो ये समझने की बात है। हाँ, इम्प्रूवमेंट अपने हिसाब से होगी, कुछ गाँव में लेट से आ रहा है मामला, कुछ जगह जल्दी आ रहा है, बट एटलीस्ट इट्स इक्विपिंग द ऑनेस्ट टू डू थिंग्स विथ ऑनेस्टी। हमेशा ध्यान रखो, कभी ये मत सोचना कि सब लोग डिसऑनेस्ट हैं, काफ़ी लोग ऑनेस्ट हैं, तो उनको लेकिन इक्विपमेंट आप देंगे, कानून देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, तब तो वो ऑनेस्टली उस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इन स्कीम्स को हमेशा वैसे इंटरनलाइज करना रादर दैन अदर वे अराउंड। देन ऑफ कोर्स व्हेन यू लुक एट इट, देयर इज दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना for placement skill development, again skilling more than 13 lakh candidates under this, and more than 7,89,000 have got job placements. One problem we have seen in this job placements is that not all of them are getting regular jobs. कुछ लोगों को job placement तो मिल जाती है, फिर regularization of those jobs नहीं होता, तो ये एक थोड़ी हमें दिक्कत ज़रूर देखने को इसमें मिल रही है। Then rural housing is another thing that we have worked on. दिस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और इस साल याद रखना 54,000 करोड़ रुपीस का बजटरी प्रोविजन दिया गया है टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। This is almost a 15% increase. So 54,000 crore rupees is the budgetary provision for Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. And the idea is to create 3 crore Pakka houses by 2024. Also, you know, there are convergence of various schemes here. अगर आप आवास योजना रन करते हो, you create construction of the toilet, drinking water with नल से जल, electricity like सौभाग्य, उज्ज्वला, तो ये convergence है, you know. और साथ में जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, जो कंस्ट्रक्शन में ईटेड होने का काम कर सकते हैं, कोई थोड़े सेमी स्किल्ड हैं जो राजमिस्त्री का काम कर सकते हैं, उनको काम मिलने लगता है 90 to 95% days from MNREGS. So there is a convergence of scheme in Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, which is something that we should keep in mind. So these are on rural housing that we should always consider our programs ahead. Then of course, और ये important है again तुम्हारे एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम रूरल डेवलपमेंट, ये जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं ये रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सरकार का एक और फ्लैगशिप स्कीम है जल जीवन मिशन 2022-23 बजट। द बजटरी एस्टिमेट was 60,000 करोड़ रुपीस फॉर दिस, प्रिटी हाई। जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया 2022-23 का वो भी 54,000 करोड़ का आया, विच वॉज क्वाइट सम मनी। और 2023-24 में इस एस्टिमेट को बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपीस का कर दिया गया है। In 2023-24, this estimate has been increased and now it will be 70,000 crore rupees for Jal Jeevan Mission. And the target, as I was just telling you, 3.2 crore households were under regular water supply, 19 crore rural households, increasing it to 11 crore now, which means already 8 crore are covered, another 8 crore left. The target is to make sure that it's not only regular water supply, but treated water supply, and also making sure that this water supply doesn't go beyond or doesn't go below the minimum needed. So, a sufficient amount of water supply, clean water supply, और नल से जल घर तक, आपके घर पे वाटर सप्लाई मिल जाए। जल जीवन मिशन में आपको कुछ बातें और सर्वे बताते हैं कि जो इस केस में गोवा, गुजरात, तेलंगाना एंड हरियाणा हैव नाउ अचीव्ड 100% वाटर सप्लाई फैसिलिटी। गोवा, गुजरात, तेलंगाना एंड हरियाणा, गोवा, गुजरात, हरियाणा एंड तेलंगाना। सबसे पहले तेलंगाना पहुंचा था वैसे यहाँ, ये नाम अल्फ़ाबेटिकली हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि पहले क्यों लिखा आपने कोई नाम। कभी आप मुझे ईमेल भेजते हो, आपने मेरे स्टेट का नाम पहले क्यों नहीं लिखा। ये सारे स्टेट मेरे ही हैं, भारत मेरा है और भारत आपका है, तो सारे स्टेट हमारे हैं। बट एनीवेज, तो तेलंगाना वाज द फर्स्ट वन टू रीच, बट गोवा, गुजरात, हरियाणा एंड तेलंगाना। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दीज फोर, देर आर 4 states, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी। ये 3 UTs, अंडमान एंड निकोबार,
दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी। ये 3 यूटीज ये 100% जल जीवन को अब कवर कर चुके हैं। दे आर हैविंग 100% टैप वाटर कनेक्शन। सो कीप दैट इन माइंड। हर घर जल इनको नाम दिया जा रहा है, दैट दे हैव अचीव्ड हर घर जल। ऑलराइट, दीज 4 states, and then apart from these 4 states, Puducherry, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, so these have achieved Har Ghar Jal values, Andaman and Nicobar Islands. Now, when you look at this further, and there are Har Ghar Jal block, Har Ghar Jal Panchayat, so it's being targeted everywhere. As I told you, that is also targeting, if you look at it, it is also targeting water supply, quality water supply to panchayats, quality water supply to schools, quality water supply to hospitals. All of these are also being targeted under Jal Jeevan Mission. एक बॉक्स 6.12 दिया है आपको, 6.12 आप जल जीवन मिशन को लेकर अगर उसे रीड कर लेते हैं तो आपके काफ़ी बेनिफिट होगी उससे। जैसे वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ आर गिवन टॉप प्रायोरिटी, and then as I told you, WASH, that is water supply, sanitation and hygiene, have been given a top priority in public health, and water quality information system has been established, which is a real-time data provider. And then field testing kits have been distributed among people, mainly from self-help groups, to give them returns. तो ये आपको कुछ और details मिलेंगे which can help you too. Then of course there is mission Amrit Sarovar. ये बहुत ही अच्छा मिशन अगेन लॉन्च किया गया है। 75 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री इन द अमृतकाल वर्ष। तो ये कोशिश की जा रही है मिशन अमृत सरोवर के अंदर। ये 24 अप्रैल 2022 से लॉन्च हुआ, पंचायती राज डे है ये, 24 अप्रैल 2022 मिशन अमृत सरोवर वॉज लॉन्च। इज द पंचायती राज डे टू कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर। द पर्पस इज टू कंजर्व water for future. That is how it was started, and the basic idea is that it was targeting around 50,000 Amrit Sarovar, but now there are more than 93,000 Amrit Sarovar sites which have been identified. So 50,000 Amrit Sarovars were targeted initially, but now 93,000 Amrit Sarovar sites have been targeted. 27,000 is where the construction has already happened, and 54,000 is where the construction has begun. 54,000 ऐसे हैं जहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, 27,000 ऐसे हैं जहां कंस्ट्रक्शन अब कंप्लीट हो गया। पर्पस वाटर को कंजर्व करने का है थ्रू मिशन अमृत सरोवर। अब ये पेपर 2 में भी आ सकता है, पेपर 1 ज्योग्राफी से भी कनेक्टेड हो सकता है, पेपर 3 ऑफ कोर्स में तो आ ही सकता है। कैसे बात कर सकते हैं वाटर स्कैर्सिटी सॉल्यूशन पे, और ये बातें अगर तुम लिखोगे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, इन लेक्चर्स का मेरा पर्पस ही है कि मेरे स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड रहें अबाउट द लेटेस्ट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, एंड देन योर आंसर बिकम्स वेटी। जब आप क्वालिफाई करते हो आपको ये बातें पता होती हैं, सो यू मेक पुट एड वेट्स टू दैट इन दैट मैनर। देन ऑफ कोर्स देयर इज अ जलदूत ऐप measuring water level in a gram panchayat through 2 to 3 selected open wells twice in a year. That is the Jaldut app that has been launched. तो आप याद रखोगे इन बातों को ठीक तरह से। Then of course the next thing that comes in is Swachh Bharat Mission Gramin, and now 1,24,099 villages have been declared ODF plus till 10th November 22. So in that case it means that now we have achieved not only ODF status, it was said that ODF status has been achieved for all the villages by October 2019. Now the villages are achieving ODF plus, that is not only open defecation free but also solid and liquid waste management facilities being available. Not only open defecation free but solid and liquid waste management facility available. यहाँ लेकिन पता है क्या, रियलिटी में और सरकार के डेटा में एक गैप है। बहुत सारे विलेजेस को ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी वो पूरी तरह ODF प्लस तो छोड़ो, ODF भी नहीं है। तो यहाँ गैप है हमारे डेटा में। आप हाईलाइट इसको, अब आप एग्जाम में ये तो नहीं लिखेंगे गैप दिखता है और गलत झूठ बात लिखी जा रही है, आप इसे ऐसे लिखेंगे दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड ODF and ODF plus, there are several rural areas which have at times retrogressed or gone back or declined into the previous regime, where a small but relevant percentage of population is still
practicing open defecation. That kind of language saves you from any kind of negative penalty, but you have to write this because we have seen these reports by even neutral agencies coming in public domain. तो आप स्वच्छ भारत मिशन पे ये बातें दिमाग में रखेंगे अपने. Then of course the LPG connections have been released for 9.5 crore people, and it has increased LPG coverage from 62% to 99.8%. As I told you, from fiscal year 22-23, Ujjwala 2.0 has been launched, and in this there will be deposit free from 2022-23 Ujjwala 2.0 deposit free connection and first refill free, and formalities reduced to make sure that we popularize the use of cleaner fuel across the rural areas. ये गोल्ड माइंस हैं जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इनको रिवाइज भी कर लोगे और इतने पॉइंट भी लिख लोगे, तुम सोचो 150-200 वर्ड तो यही बन जाते हैं, और ये रेलेवेंट 150 वर्ड फिर बनेंगे, पॉइंट देते जाओ, आंसर लिखते जाओ. सो दैट विल हेल्प यू एक्चुअली गेट मच बेटर रिजल्ट्स इफ यू आस्क मी. Then of course comes rural connectivity. As I told you, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. I'm sorry. This is about all-weather roads and to 7 lakh plus kilometers of road, 77-89 long span bridges being constructed. And as I told you, now the scheme is in its third version, third scheme. 2019 से PM ग्राम सड़क योजना 3.0 की शुरुआत हुई, जिसमें it will be connected to ग्रामीण agricultural markets, connected to educational institution, connected to healthcare institutions. All these connectivities will also be developed to give a higher living standard to people in the rural area. इसको ease of living का part भी बनाया गया है. एक और बात आप ध्यान रखेंगे, ये उन सभी unconnected habitations के लिए हैं. All unconnected habitations which have a population of more than 500 in normal regions, plain regions, and 250 plus in hilly regions. All those will be covered under the scheme. All right, then comes the next part up, electricity. अब ये पता है क्या है, अगर कभी कोई question पूछ लें about steps taken by the government to promote rural infrastructure, तो ये रोड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इनके लिए आप पॉइंट्स लिख सकते हो. सो दैट इज फॉर सौभाग्य, दैट इज अबाउट सहज बिजली हर घर योजना, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मोर देन 2.9 करोड़ हाउसहोल्ड्स हैव बीन कवर्ड अंडर दैट. एंड अदर देन दैट देयर इज ऑल्सो द दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, विच नाउ कवर्स ऑल द रूरल एरियाज in India. So these are all physical infrastructure development for rural areas. Then there are direct benefit transfers for rural areas, and the survey discusses it again as a part of a box, where, or rather a page, where they say that this is page 212 in survey. Again, this is a good read in case you are reading things across. इसमें बात करते हैं वो that 26.5 lakh crore has been transferred through the DBT route, and 2.2 lakh crore worth of saving has happened by identifying those who were non-existing beneficiaries. You know, 9.5 crore, 4 crore non-existing beneficiaries. साथ में end to end digital classification की benefit दी गई है. सर्वे इसको EED बोलते हैं, end to end digitalization. beneficiary से लेकर ऑफिस तक जहां बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे क्या होता है, लीकेजेस के चांसेस, करप्शन के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं. यू नो, दैट इज द आइडिया. और ये जो बेनिफिट सर्वे लिखते हैं ये सिर्फ सेंट्रल स्कीम्स पे है. देन देयर आर स्टेट स्कीम्स, द बेनिफिट कैन अक्रू ऑन द स्टेट स्कीम्स ऑल्सो. दिस इज अ बेनिफिट रिटन ओनली ऑन द सेंट्रल स्कीम. एंड देन ऑफ कोर्स इनहैंसिंग रूरल गवर्नेंस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, उसमें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की है सरकार ने, for capacity building and training to empower Panchayati Raj institutions and to prepare convergent plans at the level of panchayats. This is again something good, that rural governance will improve. और इसको local government को SDG से connect करने की बात है. Connecting the local government with SDG between 2023 to 2026. You know, capacity building and training पे ध्यान होगा और लोकल गवर्नमेंट को एसडीजी से कनेक्ट किया जाएगा. ऑलराइट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग एंड लोकल गवर्नमेंट कनेक्टेड टू एसडीजी. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड LSDG, दैट लोकल गवर्नमेंट
connected to SDG. That will be the thing that will be tried. And then of course, for the purpose of proper registration, Swamitwa scheme has been launched. This is survey of villages and mapping with improvised technology in village areas. Accurate land record, ये बहुत ज़रूरी है अगर हम property related disputes को ख़त्म करना चाहते हैं. Rural areas are filled with property related disputes which unnecessarily clause into the time for our courts also. Then to bring financial stability, land को एक source of revenue बनाने का, income बनाने का, आप land pledge कर सकते हो, गिरवी रख सकते हो, loan ले सकते हो अपनी industry के लिए, तो financial stability का एक तरीका बनाने की कोशिश है. Then determination of property tax. अगर एक बार पता चल गया किसके पास क्या लैंड है तो धीरे धीरे ग्राम पंचायत को पावर है तो वो लैंड पे कुछ टैक्स लगा सकते हैं, थोड़े वो सेल्फ फाइनेंसिंग बन जाएंगे नेचर में. एंड देन ऑफ कोर्स creation of survey infrastructure and GIS maps, and they can be leveraged by other departments. Suppose there is a water supply department, suppose there is a healthcare department, suppose there is a public works department. All these can use these maps to grow better in these areas. तो ये कुछ चीज़ें हैं again, if you ask me, where स्वामित्व can help. This is again, if you ask me, important. कभी अगर आपसे ऐसे ही पूछ लिया कि स्वामित्व का क्या रेलेवेंस है, सर्वे सीधा आपको 4 पॉइंट देते हैं और अगर तुम इनको काउंट करोगे अगेन तो 100 वर्ड्स यही हो जाते हैं. तो प्रॉपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओनली ऑन स्वामित्व कि स्वामित्व का क्या रेलेवेंस है. सो डू रीड थ्रू दिस, रिमेंबर द मेन पॉइंट्स, देन इन केस इन द मेंस एग्जाम दे आस्क यू, यू विल बी एबल टू answer things better. Then of course the survey concludes in this that that India is moving towards attainment of UN sustainable development goals, ensuring that intended outcomes of social sector development schemes reach the intended, that is targeting is better, involvement of grassroots level is there so that the governance is decentralized and is being actively pursued, and technology has been a great enabler like social auditing, drone mapping, geotagging. This is how technology has been an enabler. So this is what is being tried. Survey ends on a positive note. Of course, remember in your conclusion you will always write that continuous persistence with policy is the key to success. अगर हम policies को लेके continuously persist करेंगे तो ज़रूर successful होंगे. I'll now stop at this. I will be taking a small gap here. एक हफ्ते का गैप लेना पड़ेगा मुझे आपके साथ क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूँ अगले एक हफ्ते. तो अगले जो सर्वे की क्लासेस शुरू करेंगे वो अगले हफ्ते से करेंगे. अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी लंबी कर लिया करेंगे. वी मे डू अ लिटिल लॉन्गर क्लासेस ऑन सर्वे, मे बी 1.5 hours, 1 hour 40 minutes, and we will try finishing the next 5 chapters. 7th chapter I'll do in the end. 8, 9, 10, 11, 12 is my primary intention first. So we'll finish those 5 chapters hopefully by 7th, 8th April, and then by 10th April I'm still targeting if I can finish the survey for you. So next 1 week I will not be able to meet you. I am not in Delhi. After that, of course, we will be meeting. Thank you. Have a great afternoon. Bye bye all of you.